Watch the dance. Go ahead. Show the dance. Show the dance. So there's a test, so you guys got to watch that. This is Shira Shah. This guy. You can go third EC3. TNA and again, glad to meet you. Hello, namaste. I'm Rebel. So glad to be here. Thank you for having us. क्या देखते हैं ये तो अलग रहते हैं बॉडी मूव्स ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग होना एक मेन पार्ट है इसके वैसे और फिर उसके अंदर उसकी फायर देखते हैं कि मतलब इस चीज़ को जो ट्रेनिंग कर रहा है उसके साथ खली के साथ ट्रेनिंग कर रहा है और उसमें से देखेंगे उसमें वो चीज़ है भी है कि नहीं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि सब चाहते हैं कि हीरो बनना लेकिन सब हीरो नहीं बनता। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, पैशन चाहिए होता है, एक लगी दुनिया बनानी पड़ती है अपने अंदर अगर मुझे कुछ पहुँचना है। तो उसमें हमें भी हमारे लिए बहुत हार्ड है जैसे ऐसे इंसान हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो हो वो बहुत ही पैशन है तो हमारे लिए एब्सोल्यूट के लिए बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है TNA फर्स्ट टाइम लाइव चाहते हैं कि और कनेक्ट करें। मैं सिर्फ एक पेड़ हूँ, छोटा सा बीज बना TNA के साथ अभी धीरे धीरे फल लगेगी बड़ा होगा। कितना टाइम लगा ये बीज बनाने के लिए? एक्चुअली 10 साल से कर रहा हूँ, जिम ही कर रहा हूँ। रेगुलर जिम में अखाड़ा जो होती है ना पहले स्टार्ट तो में जो मेरी बिगिनिंग्स थी और उसमें तो पहले फैमिली में कबड्डी थी और मैं भी कबड्डी से स्टार्ट किया था, लेकिन इतना दुबला पतला था कि मुझे लगता था अगर किसी ने मुझे मार दिया तो हो सकता है कि मैं हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपना बिल्डअप स्ट्रॉन्ग किया, कबड्डी खेला, तो कुछ प्रॉब्लम्स थी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। दैन स्लोली स्लोली बॉडी बिल्डिंग में स्टेट तक गया, स्टिल और एक दिन जिस चीज़ के लिए मुझे बना वर्क हार्ड एवरी डे। लोग 6 डे भी करते हैं, 8 दिन जिम करते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग, मॉर्निंग 2 आवर 1.5 आवर and also right every after 2 hours eat fish, chicken and non-veg। और ये सप्लीमेंट करते हो? सप्लीमेंट ऐसा है कि प्रोटीन लेते हैं और प्रोटीन्स होता है क्योंकि इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जैसे ये सर है मैं एक नॉर्मल पर्सन के लिए हम 10 साल से कर रहे हैं, हमारी बॉडी को बहुत प्रोटीन चाहिए, लॉट ऑफ प्रोटीन, लॉट ऑफ कार्ब्स, इसलिए हमें उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। हम इतना नहीं खा सकते पूरा दिन के 10 बार कितना खाएंगे है ना, उसको ऐसा थोड़ी करना। तो स्लोली प्रोटीन लेते हैं, डाइट लेते हैं, शेड्यूल के हिसाब से चलते हैं। आजकल जो बच्चे लोग जो जिम जाते हैं और इसमें जो क्रिएट और जो स्टेरॉइड वगैरह का जो तुरंत बॉडी बनाना है, दिखाना है कि हमारा भी मैं इसके बहुत अंगेज हूँ, मेरा खुद का जिम मैं कभी भी किसी को भी USA में वेरी नाइस गाय he asked me for you want to do like that and मैंने उनको बोला देखो मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि अपने आप को तुम देखो उस जगह पे खड़ा करके 3-4 महीने तुम कर सकते हो, then you can do that but not right because you know जब आप जिम शुरू करते हो वैसे जो बच्चा है तो उसके 18-17 साल का उसकी जो बॉडी उस चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाती क्या है, वो चीज़ें खाएगा तो ऑब्वियसली साइड इफेक्ट। तो मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता कि किसी बच्चे को पहले अब जिम जाओ, अपने आप को कुछ एक रास्ते पे देके आओ 4-5 महीने साल, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो मैं नहीं करता। क्रिएटिन प्रोटीन फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू वेरी बिल्ड अप स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत बेस ही नहीं है तो आप शुरू करते हो तो नुकसान 90% रॉन्ग। आई बिलीव फिटनेस गुड बॉडी लॉन्ग टर्म। अगर आप सोचते हो कि मुझे बहुत बिल्डअप करना है बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारा प्रोफेशनल है, भाई प्रोफेशनल हमें बहुत वर्कआउट करना पड़ता है और सब लोगों का टाइम होता है, स्पेशली बहुत सारे काम होते हैं। अगर आप 1 घंटा भी कम करते हो बहुत अच्छा कार्डियो करना है, ऑब्वियसली कार्डियो करो, जितना भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो कम ही है।
cardio कर ले घंटा जिम कर ले I do. Well, usually what will happen is when you aim for 7 days, you'll have your weeks where you'll have an appearance or you'll have something where you were able to do it. So then you get 6 days. You do get a rest because of scheduling. So when there's not a lot of, when you're not so busy, you do have the 7 days. But then, so when you do have a day you can't, it is a day of rest. Actually, जो है थोड़ा सा मुश्किल है आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो लेकिन टाइम के हिसाब से बड़ा मुश्किल है पूरा दिन आपको सैलड और वेजिटेबल्स लाइक चपाती राइस काफ़ी चीज़ें होती हैं पूरा दिन कैरी करके चलना पड़ता है मैं ऐसा कर चुका हूँ और फाइनली यही है कि अगर आप इन चीज़ों पे जाते हो तो मेरे जो ज़्यादा इंटरव्यू है कि फिटनेस है किसी को देख के कॉपी मत करो कोई भी ये है वो मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है आपको क्या पसंद है अपने आप को देखो उसमें जाओ तो अपने आप को देखो किसी की तरफ देख के कई लोगों को मैं सोचता हूँ कि हाँ कोई मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि आप ये हो वो मैं नॉर्मल पर्सन मैं वो करता हूँ जो अच्छा लगता है और अपने बॉडी में मैं चाहता हूँ कि आप Wrestling started for me. I used to cheer for wrestling in high school. It's also in my family's blood. My father, my brother wrestled, and now I have a nephew who's the third, fourth in the nation, Roman Greco freestyle wrestling, and then I got the opportunity to be on the side of Nux, and so that's when it really sparked, get in there and start training to see if I could keep up with the best of them. And it has been such an honor to get to wrestle with such a powerful women's roster. So I've been very thankful and blessed to be. मैं उसमें खेल चुका हूँ तो ना बड़ा खुशी होती है जब आप किसी को टच करके वापस आते हैं हाँ मार के नहीं जा रहा है थापी मारना और कदे कदे फिर मैं अंदर जाके कर लेना है Well, I started, it's cheerleading. I was a cheerleader for 15 years, and I stood on the sidelines, cheering for wrestling, cheering for football, and then I played full contact tackle football for the lingerie bowl. So that definitely gave me this inspiration to keep going. I conquered that dream, and so it definitely helped in the training for wrestling, and then the cheerleading background as well, with all the jumps and stunts and tumbling, it definitely gives me an advantage over my opponents in the ring. So there's always injuries when you get in the ring, whether they're minor or just a pulled muscle or a sprain or scratch. There's always setbacks, and you try to keep. That's why we try to take care of our bodies, take Epsom salt baths, and go to the chiropractor to get adjusted. Yes. Everyone has their different remedies on how to stay healthy. The thing about wrestling is that a lot of athletes, when they're hurt, they might sit out. Wrestling, there's no off season. It's year long. You're either hurt or you're injured. If you're hurt, you're still going to do it because A, you have that passion, and B, that's how you make a living. I've had 4 knee surgeries, I tore my bicep, broke some bones. Been concussed, which is not a scary subject. We take care of that. So there's some setbacks, but the second you get injured, the first thing you think about is, all right, how long until that? So it makes me a better player. Just like in lingerie bowl. Lingerie bowl started when it was just models, so now they're true athletes, and I think that's what made me better than everyone else, is because I wasn't scared to get my face messed up. I'm just a good old girl from Oklahoma, country girl. So if you don't have that confidence in the ring, you're bound to fail. So you can't think about those things. There's no real cardio that can substitute for being in a ring, though. It's really unique and strange. As far as when training, there's cardio involved. Do you go running or something, or cycling or something? In the ring, it's hard to replicate it. The only way you can really do it is being in the ring. I have a dance background, and so I have a really high cardio. And you're running for working out, you can do the dance, but when you go in the ring, you are winded every time because it's just a completely different beast.
some bangles, maybe a traditional sari, and learn a Bollywood dance. I really want to learn a Bollywood dance.